Good morning, student. Welcome to hashtag Maths Adda. My name is Master Akish. This is the pattern mathematics class 6, chapter 1, Vanita Prakash. There is a new book of Vanita Prakash, Ganita Prakash. Sorry. Draw the sequence of all twos. So there is a question. If you haven't seen my previous video, please watch out the previous videos. Draw the sequence of all twos. सो ये कह रहा है कि सीक्वेंस बनाना है ऑल टूज का, ड्रॉ करना है केवल टू 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 टू. इट मीन्स इट मस्ट बी टू 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 टू, ओनली टू टू. तो दो दो बॉक्स बना दो, टू 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 टू. ओके, लाइक दिस. You have 2 points. Either you can draw 2 points. Okay, your choice. So this is also okay. This is also okay. Okay. So anything you can check. So now we will get what do we get if add up all odd numbers? So adding up odd numbers. Okay, so what is the first odd number is 1. Okay, 1 का 1. Second odd number is 1 plus 3. Second 1 के बाद second what is the next odd number is after 1? 3. तो 1 plus 3 equal to 4. 4 is what? Okay, what is third odd number? 1 plus 3 plus 5. 5 plus 3 8 plus 1 9. Okay, what is the next odd number? 1 plus 3 plus 5 plus 7. It becomes 16. So देखो, see, this is the 1 का square, this is the 2 का square, this is 3 का square, this is 4 का square. So in the previous videos we have learned the square pattern. So 1 का square means 1 into 1. 1 2 का square मतलब 2 into 2. 2 2 जा 4, तो ये 4 आ रहा है. 3 का square means 3 into 3 9. 4 का square means 4 into 4 16. 1 का square means 1 into 1 1. So these are the square patterns. So whenever you are adding up all the odd numbers, you will get the square patterns. So you will get the square patterns. Okay, so it will keep going on. So pictorial view like this. 1. Okay, 1. So if you are adding 1 में 3 ऐड करना है तो 1 2 3. ओके, तो कितने बन गए? 1 2 3 4. दिस इज 2 का स्क्वायर. ओके, पिक्टोरियल व्यू. आफ्टर दैट हाउ मेनी बॉक्सेस यू हैव टू ऐड? 5 बॉक्सेस. तो मेक द 5 बॉक्सेस. ओके, 3 लाइक दिस एंड 2 हियर. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 is what? 3 का square. Okay, so like this, these are the pictorial view. Okay, 5 के बाद after 5 how many boxes you have to add? 7 boxes. तो put 4 here, 3 like this only, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 like this. Okay, so it will keep going on. This is the pattern you will learn here. So if I'll tell you find the sum of first 50 odd number, find the sum of first 50 odd number. So how will you get the sum of first 50 odd number? If you have to get the first 50 odd number sum, you will have sum of first 50 odd numbers. So whenever you are getting the first 50 odd numbers, so any number you are adding, it becomes, how many numbers are here? 1 2 3. So it becomes 3 का square. How many numbers are here? 1 2 3 4. Total 4 number, तो 4 का square. Total how many odd number? 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus dot 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 dot. ये up to 50 odd numbers. 50 odd numbers ये ऐड होगा तो टोटल 50 नंबर्स हो जाएंगे.
it means it will become 50 का स्क्वायर, like 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. सिमिलर वे में 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर इक्वल टू 50 into 50 equal to 2500 would be the answer. So this is the sum of first 50 odd numbers. So you can get the answer like this. So whenever anything you are getting the question like this, so just square it. So the next question is, what do we get if we add up and down the natural number? Up and down the natural number. If we add up and down the natural number, what do we get? What do we get if we add up and down natural number? Up and down natural numbers. So सबसे पहले नेचुरल नंबर पता होना चाहिए. यू शुड नो नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 2 3 4. दीज आर द नेचुरल नंबर. अभी अप एंड डाउन. ओके ओके. सो 1 से अप गए तो 2 तक. Okay, so like this only. First number is always 1. So first number को always keep it like this 1. फर्स्ट नंबर से अप गए 2 तक, 2 से फिर से 1 आए डाउन. अप एंड डाउन. अप 1 से 2 पे गए, 2 से फिर से 1 पे आए. 1 से अप गए 2, 2 से डाउन आए 1. So up and down pattern is not 1 plus 2 plus 1, 1 2 plus 2 3, 3 plus 1 4. फिर अगेन 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 1 से 2 पे, then again 2 to 3, then 3 to 2, 2 to 1. up and down pattern. So like this only है ना. 2 plus 1 3, 3 6, 2 8 plus 1 9, like this. Again 1 plus 2 plus 3 plus 4. यहाँ से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करो. स्टार्ट द बैकवर्ड काउंट. 3 plus 2 plus 1, it will come 16. Okay, next number 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Again backward counting. 5 के बाद 4 plus 3 plus 2 plus 1, it will come 25. Okay, so it is the square of 1, it is the square of 2, it is the square of 3, it is the square of 4, it is the square of 5. Like this it will keep going. So the maximum number यहाँ देखिए कहाँ तक जा रहा है. इट इज गोइंग 5 तो 5 का स्क्वायर. इट इज गोइंग अप टू 4. फिर बैकवर्ड काउंटिंग इट इज 4 का स्क्वायर. इट इज गोइंग अप टू 3. इट इज विद 3 का स्क्वायर. इट इज गोइंग अप टू 2. मैक्सिमम नंबर इज 2, 2 का स्क्वायर. मैक्सिमम नंबर इज 1 तो 1 का स्क्वायर. इफ आई ऐड यू, आई गिव यू द क्वेश्चन विदाउट 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 plus 100 it is going. Then again coming back 99 plus 98 plus dot 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 plus 1. What will the answer of this? So maximum number where it is going 100. It means it will become 100 का स्क्वायर. 100 का स्क्वायर means 100 into 100. Okay, 1 के पीछे कितने जीरोस? 2 2 4 जीरो. 1 2 3 4. This is the answer for this. So such question you have to do in such a way. Okay, so these are the good patterns, good beautiful patterns where you can learn these questions. So we'll keep we'll complete this chapter in next sessions. Okay, so please keep in touch. Do like, subscribe and share the channel. Thank you very much. Thank you.